PolicyBazaar.com. Patriot, powered by Imperial Blue Music CDs. Hi, I'm Major Gaurav Arya, and I'm at the Shaheed VT Matthew Parade Ground here in Bangalore. To my left and to my right are young recruits, young women recruits, who are now part of a new raising, the Mahila Battalion of the CRPF. They come from diverse backgrounds. You can find young recruits from every state and every union territory of India, but there is a common thread, the burning desire to serve the motherland, the burning desire to wear the uniform. And what is the other common thread? The other thread is almost everyone was told by this society that they were not good enough to wear the uniform because they were women. You should hear the stories, and viewers, you will hear their stories. And when you hear the stories, I can assure you, your hand will go up in a salute to them. Their spirit, their fortitude, their courage, and their sheer valor in face of adversity. Some did not have food to eat. Some had a missing parent. Everyone has tremendous tales of disparity, tremendous tales of poverty, tremendous tales of how society ganged up to actually make them bow down. But bow down, they did not. What you're looking at behind me are not just recruits, not just Mahila recruits of the CRPF. What you're looking at are victors. What you're looking at are brand ambassadors of women empowerment. Viewers, I am with Deputy Commandant Ratnamma of the CRPF. She's posted here in the Mahila Battalion. She is a national champion in shooting, and in small bore shooting, she's broken the national record 4 times. Before we speak to her, I'd like you to watch her exemplary shooting skills, after which we will have a small conversation. Viewers, you've just seen Deputy Commandant Ratnamma's firing skills. Now, I'm going to speak to her because this is all very interesting. Her story is very interesting. आप बताइए रत्नमा जी, आपने फायरिंग कब शुरू करी? कब आपको पता लगा कि आप में वो हुनर है, वो कला है कि आप नेशनल लेवल पे शूट कर सकें? जब मैं बेसिक ट्रेनिंग में 1992 में CRPF ज्वाइन किया था, बेसिक ट्रेनिंग में मेरा फायरिंग बहुत अच्छी थी। उस टाइम जो टीम में जो शूटर्स थे मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा फायरिंग बहुत अच्छी है, तुम टीम में सेलेक्ट हो सकती हो। मुझे उस टाइम मजाक लगा था, मैं बोला था नहीं ऐसे ही बोल रहे। उसके बाद 1995 में जब टीम में सेलेक्ट हुआ तो मैं डायरेक्टली नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई थी। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल में मैंने मिनी नेशनल क्वालिफाई करके 1996 में फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उस टाइम होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता से पहला गोल्ड मेडल ली थी मैंने। तब से कितने अवार्ड्स आप जीत चुके हैं? तो मैं 22 गोल्ड मेडल है, 2 ब्रोंज 2 सिल्वर। 22 गोल्ड मेडल्स, 2 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर, कमाल की बात है। तो हमने देखा आपने AK-47 से फायर करा, आप पिस्टल फायरिंग भी करेंगी? हाँ, पिस्टल भी करूँगी। चलिए आइए, रेंज पे चलते हैं, आपसे बात भी करते हैं और थोड़ी पिस्टल फायरिंग भी करते हैं। आपको काफ़ी टाइम हो गया, 92 में आई थी आप CRPF में? 92 में। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में कौन कौन है? मदर, फादर, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर है। अच्छा। मेरी फैमिली में एक मैं ही पहले जो फोर्स ज्वाइन किया, हमारे इवन फैमिली में कोई भी ना यूनिफॉर्म फोर्स में थे, कोई भी नहीं थे। मुझे एक्चुअली 1990 में जो उड़ान सीरियल आ रही थी, आपको पता होगा। अच्छा। उस सीरियल से मैं इंस्पायर्ड हुई। टीवी सीरियल से? हाँ, कविता चौधरी का जो था, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक दिन मैं भी पुलिस ऑफिसर बनना है। मेरा बहुत सपना था, बट मेरे घर वाले नहीं चाहते। एक्चुअली मैं एक लौती बेटी थी, स्पेशली मेरी मम्मी नहीं चाह रही थी कि मैं इतना दूर आके जॉब करूँ। अच्छा। मैं बेसिकली कर्नाटक से हूँ। तो उसका जब 1992 में बेंगलुरु में थी, पढ़ने के लिए आई थी, तो उस बीच में 1992 में जब CRPF का मैंने ऐड देखा, मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया। फिर मैं ज्वाइन होने के बाद पेरेंट्स को बताया, मतलब मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था मैं CRPF में मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। अपॉइंट लेटर लेके जब मैं घर गई। अच्छा, किसी को नहीं पता था? नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। जब मैं घर गई तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा रोने लगी। क्या बेटी ने क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? मेरे भैया से झगड़ा करने लगी। एक ही तो बेटे, गांव वाले क्या सोचेंगे, एक ही बेटी है। उसको मैंने जब कहा मुझे दिल्ली ट्रेनिंग भेजा जा रहा है, तो मदर ने एकदम सपोज कर दी कि नहीं जाएगी। लोग यही सोचेंगे एक ही बेटी है, उसको इतना दूर नौकरी करने के लिए भेजा। अच्छा। क्योंकि गांव में होता ना इस तरह का सोच। फिर मैंने उनसे ये कहा, अगर आप मुझे नहीं भेजोगे पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। आपने ये बोल दिया मदर को अपने? मैंने बोला मुझे
ये ज्वाइनिंग लेटर मिला है, मुझे अच्छा। ज्वाइन करना है, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, फिर तो फिर उसके बाद मेरे फादर ने मेरी मदर को कन्विंस किया। तो ये सबको देखते मेरे फादर ने कहा कि उसको तुम मत रोको, उसका सपना है, उसको पूरा करने दो, उसको जाने दो। फिर मैं दिल्ली ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद फिर मैं टीम में सेलेक्ट हुई 1995 में। टीम सेलेक्ट होने के बाद कंटिन्यूसली उसके बाद फिर मैं टीम में बहुत सारे मेडल्स लिए मैंने जी। ऑल इंडिया फिर मैं मैनेजर भी रही टीम का, सेंट्रल शूटिंग टीम का। अच्छा। मैनेजर कम कोच 3 साल। उसके बाद फिर इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद मेरे 56 मेरे अंडर में टीम शूटर्स थे। तो इधर भी 1-2 लोग हैं जिनको मैंने शूटिंग सिखाई है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने जो बात करी है ना कि आपने उड़ान सीरियल देखी या फौजी सीरियल देखी और आपको लगा कि आपको वर्दी पहननी है, इसके बाद कई लोग आपको देखेंगे और कई लड़कियां बोलेंगे कि हमें रत्नमा बनना है। नहीं, इसके बाद सर मैं ज्वाइन होने के बाद मेरा छोटा ब्रदर जो यंगर ब्रदर है, उसको मेरे फादर बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि फोर्स में आए। वो ज्वाइन किया, मेरी भाभी ज्वाइन की, मेरी छोटा भाई का वाइफ। इवन आज हमारा घर में फौजी फैमिली है पूरा। मैं पहले आई, मेरे साथ साथ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ज्वाइन किए। सब मोटिवेट हो गए। हाँ, सब आ गए ना। मेरे भाई ने एक ही बात, जब मेरे फादर ने उसको मना किया तो जब दीदी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। So viewers, we've just seen Miss Ratnamma fire the AK-47 and I've gone and checked and all the rounds are in center mass, which is fantastic firing. For a weapon like AK-47 which kicks like a horse or a mule, it goes up, there is a lot of muzzle climb in an AK. Now she's going to fire pistol, a 9mm Browning, which is again an old trusty weapon, an old trustworthy weapon. I've used this weapon in the Indian Army and let's see her firing. कोई भी वेपन और टेक्निक तो सेम है। बिल्कुल। आपने जो फायरिंग शुरू करी एंड आप जो फायरिंग करती हैं, आपने कहा कई लोगों को सिखाया, आपकी तरफ से आपको कौन सा लगता है कोई नई ऐसी लड़की है जो अचानक जैसे आपके जैसी है, गांव से एक दिन आई, सारी गोलियां बुल पे सीखना। फायरिंग एक ऐसी चीज़ है, आपको ड्राई प्रैक्टिस और सबसे पहले कि फायरिंग का टेक्निक से आपका पहले पोजीशन, होल्डिंग, उसका ट्रिगर ऑपरेशन आपको ऐसे ये 3 चीज़ जिसने सीख लिया तो कोई भी वेपन हो फायर कर सकता है। बट उसके लिए आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये बुनियादी उसूल याद करेगा कोई? हाँ, याद करेगा, प्रैक्टिस करेगा। हाँ, प्रैक्टिस करेगा। लेकिन उसके लिए आपको जब फायर करो, क्योंकि बाकी गेम फिजिकल गेम है, ये मेंटल गेम है। मेंटली आपको जो है इतना जो कॉन्सेंट्रेट करेगा फायरिंग पे, वो अच्छा शूटर बन सकता है। दिमाग बिल्कुल शांत, सब कुछ ब्लॉक करके चाहिए। फिर हाँ, viewers having a very interesting conversation with this champion shooter and center mass, fantastic shots. And I'm so proud of her, such stories. And I still can't wrap this around my head. One young girl, long back, comes to CRPF with a dream. After having, after trying to convince her mother and her father, she comes to the shooting range. And on day 1, she gets a whole lot of bullets in the bullseye, the center mass. And suddenly the instructors get up and say that, hey, you're the next national champion. You're the next shooting prospect for the CRPF. Here on this range, such magic is made every day. Viewers, here you have these young soldiers, these young women who are trained, and they're going to show you a demonstration of how they can field strip or take apart an Insas rifle, in pitch dark. To simulate pitch dark, what they're doing is they're putting those, cloth pieces over their eyes, and then they're going to field strip these weapons and put them back again. And the value of this is simple, that in an operational area, you never know when you might be in a circumstance where you're operating at night and your weapon jams. You should have the ability of doing this. We call it the Fori Ilaj ki Karwai. Fatafat, get the weapon back into action. That is what it is. With me, I have that instructor, C.A. Chuma. आपका Patriot शो में स्वागत है। अच्छा, आप बताइए, आपको कितना टाइम हो गया CRPF में? लगभग 23 चल रहे हैं। 23 साल हो गया।
वेरी गुड। 95 से आप हैं? एक्सीलेंट। तो ये जो यहाँ पे जो यंग रिक्रूट से सीख रहे हैं ये आप सिखाने का क्या मतलब है, क्यों सिखा रहे हैं इनको ये? सर इनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं ताकि कोई भी मुश्किल पड़ जाए। यहाँ पे भी हमारे जो डिप्लॉयमेंट ड्यूटी है जो ऑल इंडिया में है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नॉर्थ ईस्ट में भी है, वहाँ पे इनको इस तरीके से ट्रेन करके वहाँ पे ड्यूटी में डिप्लॉय करनी है। जहाँ पे भी खतरा लगे, यहाँ पे इनको मुश्किल एरिया में अपने आप को उन मुश्किलों का सामना करके अपने आप को बचाव करें और देश का भी बचाव कर सके, इसलिए इनको ट्रेन किया। अच्छा, आप वेपन इंस्ट्रक्टर हैं? जी सर। शुरू में जब पहली बार इन लोगों ने हथियार पकड़ा था तो क्या मुश्किलें आई थी इनको? क्योंकि ये तो गांव से बच्चे थे उस वक्त जब ये आए थे गांव से या अपने शहर से, जहाँ से भी आए थे ये लोग। हाँ बिल्कुल सर, ये तो जब कॉलेज से कई लड़कियाँ पढ़ते आई है, काफ़ी नाजुक जैसी थी। इनसे पहली बार में इनसे काफ़ी मतलब हथियार को वगैरह हैंडल करने में वगैरह थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो ये इतनी ट्रेंड है, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंस से काम करती है। काफी अच्छी लड़कियां हैं, काफी टैलेंटेड लड़कियां हैं। अच्छा। और इनमें एक जज्बा है, हम ये करके दिखाएंगे, क्यों नहीं होगा हमसे। Viewers, I've been speaking to Sia Chuma, who's their instructor, and now I'm going to speak to these young under trainees here and try and find out from them. You know, a lot of them have very interesting stories, and I want to understand, I want to know where they come from, where they're going, and what their dreams and aspirations are. आपका नाम क्या है? मेरा नाम पाटिल मनीषा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, तो मनीषा आपकी अब ट्रेनिंग काफी कुछ हो गई है, कुछ आपकी ट्रेनिंग बाकी है। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए आपके घर से सपोर्ट था आपको? हाँ सपोर्ट था, मेरे पापा का ज्यादा सपोर्ट था। अच्छा, तो फिर आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 बहन हैं और एक सबसे छोटा भाई है। भाई है, तो भाई तो अभी बहुत छोटा होगा? बहुत छोटा, 8th क्लास में जाता है। अच्छा, 8th क्लास में जाता है। तो आपको क्या, आपके पिताजी चाहते थे कि कोई जाए फोर्स में? हाँ चाहते थे। अच्छा। कि लड़के का जगह लड़की ले। उनका सपना था कि मेरा बड़ा लड़का हो और वो फोर्स ज्वाइन करे। तो भाई छोटा था तो क्या हुआ, मैं तो बड़ी हूँ ना। हाँ। तो इसलिए मैंने फोर्स ज्वाइन कर लिया, पापा का सपना भी पूरा कर दिया। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना कुमारी है सर, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड से। आपके घर में कौन कौन है बीना? मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन दादी माँ। अच्छा, तो उनको कैसा लगा जब आपने सीआरपीएफ ज्वाइन करी? सर उन लोग का तो ख्वाहिश था कि मैं फौज ज्वाइन करूं, और मेरा तो बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी ना, तब मेरा था कि मैं यूनिफॉर्म जॉब मुझे बहुत पसंद था, और मैं उसी का लक्ष्य लेके पढ़ी भी, और आज मैं यूनिफॉर्म जॉब मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो बीच में छुट्टी गई घर पे, अपने आप में कुछ चेंज दिखा? यस सर। और घर वालों को कोई चेंज दिखा? यस सर, गाँव वालों से भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, और अपने घर वालों से भी, रिश्तेदारों वालों से भी, सब तरह से मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला पहले के अलावा। घर में गए पहले 1-2 दिन कैसा लगा? मिड टर्म ब्रेक में गए, बीच में छुट्टी में गए? 1-2 दिन तो मैं आराम से सोई, लेकिन तीसरा दिन से मुझे लगने लगा वो ट्रेनिंग एरिया ही मेरे लिए अच्छा है, उधर मेरे अच्छा नहीं लगने लगा। Viewers, always such an uplifting experience to speak to these young and very Joshila type, youngsters. They're here and all from diverse backgrounds. Somebody's coming from Maharashtra, somebody from Madhya Pradesh, somebody from, the Northeast, all over the country, Jharkhand, But all of them, while having very different stories, have one common thread in all their stories. All of them fought against societal norms. All of them fought against perception that women were not good enough. मेरा नाम अनिता भी, मैं 1997 में मैं सीआरपी में भर्ती हुआ। अभी 21 साल सर्विस हो गए, और इंस्ट्रक्टर के रूप में 12 साल इनको ट्रेनिंग दी है, और 1 साल यूएन डिप्यूटेशन गए थे वेस्ट अफ्रीका लाइबेरिया में। मैं सीआरपी में बचपन का मेरा एक सपना था पुलिस में आने के लिए। मेरा 3 भाई है, मैं एक ही बहन है, घर की छोटी थी, लेकिन कोई पसंद नहीं करता था मेरे को सीआरपी में भेजने के लिए। बचपन से मैं सेल्फ अपने आप डिपेंड करके जीने के लिए इच्छा करती थी। इसलिए मैं जब मेरा 10th पास होने के बाद मैं खेत में शनिवार और संडे खेत में काम करने के लिए जाती थी। उस पैसे से मैं कंप्यूटर भी सीखा था। घर वाला से भी मना किया था सीआरपी में, क्योंकि महिला के लिए सीआरपी के पुलिस के नौकरी उन लोग बहुत
ये सोचा था फैमिली लाइफ नहीं है, फिर भी वो बच्चे को रखना मुश्किल होता है क्योंकि डिप्लॉयमेंट JNK, छत्तीसगढ़, आसाम, मणिपुर, मैं केरला की रहने वाली है, उधर जाने से बच्चे को देखभाल नहीं हो पाएगा करके उन्होंने मना किया। लेकिन एक हफ्ता घर वालों को स्ट्राइक करने पड़ा CRP में भेजने के लिए। फिर CRP में आने के बाद मैं मीटिंग गए थे, तब मेरा पड़ोसी सब आके पूछा असली राइफल है या नकली राइफल है आप लोग? मैं बोला असली राइफल से फायर कराता है। तब उसके बाद बहुत लोग मेरा गांव से अभी CRP में आ गया। Viewers, today I'm joined here by Mrs. Vijaya Dhondiyal, Commandant 240th Battalion of the Central Reserve Police Force, which is a Mahila Battalion. And I'm going to be speaking to her because she is the leader of this battalion. The battalion which will, it's a new raising. It's going to complete its training, the basic training in the month of March, after which it will be launched into operations. Ma'am, welcome to Patriot. Thank you, sir. I would like to ask you, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो महिला बटालियन है, ये जो कॉन्सेप्ट है महिला बटालियन का, ये कितना पुराना है? ये महिला बटालियन क्यों बनाई जा रही हैं? कितनी बन चुकी हैं? ये कौन सी महिला बटालियन है नंबर के हिसाब से? इसके बारे में जरा बताइए। Actually, it was in year 1986 when first Mahila Battalion was raised. And it was basically to deal the Mahila agitators, women agitators during various agitations and other law and order problems. All right. And since the raising of first Mahila Battalion, now we have 6 exclusive Mahila Battalions, including this one, 240 Mahila Battalion. 240, yes. All right. And the contribution of our women personnel has been outstanding, and they have served everywhere, be it in JNK, Northeast, and even overseas deployment in Liberia under UN mission. All right. They were also part of IPKF mission in Sri Lanka, and in fact, you'll be glad to know that first recipient of Ashok Chakra of CRPF was in the Parliament attack. Yes, was Constable Kamlesh Kumari, who was martyred during the Parliament attack in 2001. And she got the Ashok Chakra. Yes. Yes. And I think now with the decision of government to increase the women workforce to 33% in CRPFs. So it will certainly going to increase manifold in the near future. I think it's a very welcome decision also. Yes, and their role will not be limited to tackling only women, but it will be extended to other duties and other internal security related duties along with their male counterparts. So tell me something about yourself. When did your journey with CRPF start? Okay, actually my father, he was in CRPF. All right. Yeah, so I can say that since childhood I was attracted towards uniform services. आपने देखी CRPF? Yeah, yes, I was born and brought up in this CRPF only. All right. But with the passage of time and seeing my other friends also, I also started pursuing other career options like medical or banking services that are considered safe and suitable options for girls. Yes. But that charm towards uniform services was always there, and it kept pulling me towards it. All right. So after my completion of my graduation, I decided to join CRPF, and I informed my parents about it, but they were not comfortable with that. Yes. Especially my father, because since he has seen the life of a CRPF officer in CRPF, he has experienced it. Frequent movements and being away from family for long duration. So he didn't want me to go through all that. What he had already gone through. Yes. And then there were some relatives also, some family friends who were not very supportive of my decision. They were like, कुछ लड़कियों वाला कुछ career option आप क्यों नहीं आप देखते? But their responses didn't deter me, and I stood firm on my ground. But after joining the force, after getting commissioned as an officer in CRPF, or after passing out from the academy rather, did you face any sort of discrimination or something in which your colleagues must have said that ये लड़की है इसको मत भेजो, जो male officer है उसको भेज दो? हाँ जी, बिल्कुल. In fact, after passing out from that training academy, I joined my first unit in Aligarh. That was 104 RF, and the attitude of fellow colleagues and senior officers
was I won't say they were discriminating. It was more of overprotectiveness. Yes, towards me. जैसे घर में होता है. हाँ जी, इसको कहीं नहीं बाहर नहीं भेजना, आप यहीं headquarter में रहो. I was given duties in headquarter. Okay. Not posted to any company, service company. And in spite of my constant pleas with the unit commanding officer, he never sent me out for deployment with the troops. But I think now that has changed a lot. उसके बाद मुझे लगता नहीं कि ऐसा मुझे कभी फील हुआ. That was initially for 2-3 years that I faced this type of discrimination. And because उनके लिए भी शायद नया ही होगा. Yes, very true. They also have not seen a lady officer. They're seeing for the first time. But now the situation has changed. Yes. So many women are joining forces. Yes. CAPF, be it CRPF, BSF. And they are being deployed in different places, be it in J&K, northeastern states, even Naxal areas. Yes. So that attitude of male counterparts, that is also changing. They are becoming more accommodative. Yes. And they are not looking at you as women, but as officers, commanders first. That is very important. Yes. There must be a lot of people coming up to you and saying, ki, you know, we want to join CRPF, and some of them would have joined CRPF also. No, all these young recruits, these girls, they also had a similar kind of story, as I mentioned before. Yes. What problems do you face in dealing with these young girls? Because some of them are 18, 19, 20 years of age, coming from very backward areas. I spoke to some of them. Yes. Lot of josh, lot of fortitude while dealing with very adverse circumstances, because training is not fun anywhere. Training is meant to be not fun. But people coming from, some of them from very, very humble backgrounds, and some of them from very far-flung areas. So, and all, there's somebody from Nagaland, there's somebody from Arunachal, there's somebody from Kerala, there is somebody from Rajasthan, and there is somebody from the other end. I mean, all over the country, every state is represented here. Yes. How do you deal with this diversity? Actually, we have faced many challenges since these girls have joined this training institutions. All right. Initially, when they reported at this institution, so at that time they had very little idea about the force and about the training program. Okay. So, and most of them had left their home for the first time, and some are married. They have left behind their children and families. So they were going through a phase of homesickness a lot. Yes. So we have been constantly counseling them to overcome that feeling. Then another challenge was, which we faced, was their diet aspect. Okay. Since they have to undergo a very tough training program, so a lot of stress was put on their dietary aspect, and they had very casual dietary habits. Yes. So we formed a compact diet menu program for them, so that they are physically fit to undertake this rigorous training program. And thank you very much for joining us on Patriot. Thank you very much, ma'am. Viewers, I was speaking to the Commandant 240, and one thing I want to tell her, because she is now, people look at her as a role model. And I want to tell, for all those young girls, young women who are watching this program, many a time, when there is a difficult circumstance, your male colleagues will tell you कि आप पीछे हट जाओ, हम काम करेंगे, ये काम लड़कियों का नहीं है. वो आपके मेल कॉलीग्स झूठ बोल रहे हैं आपसे. वो काम आप उनसे अच्छा कर सकती हैं. सिर्फ थोड़ा हिम्मत, थोड़े हौसले की बात है. और ये बात मिसेस विजय ढोंडियल प्रूव कर चुकी हैं. इनको भी समाज ने रोका. The society stopped her from joining CRPF. She joined, she's doing very well, and she's the first commanding officer of 240 CRPF Battalion, the Mahila Battalion. And on behalf of the team of Patriot and Republic TV, we wish her all the best. PolicyBazaar.com. Patriot, powered by Imperial Blue Music CDs.